Hello, Nimra. Assalamualaikum. Hi, ma'am. Walaikum salam. How are you? Ma'am, I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Hello, Elia. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Fine, ma'am. Hello, Mahnur. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you? I'm good, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Hello, Halima. Hello, ma'am. Hello, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Okay, I think I will start now, okay? And so we are going to continue. Okay, right. Okay, fine. So let me share this with you. Okay, so now you can see the book, right? Yes, ma'am. Okay. So what were we talking about last time? We were talking about, yes, who would like to do a small recap? Yes. We were talking about, Bolo? Ma'am, reflections of refractions. Just a moment. Okay, so let's also write this down. Just why is this? So we were talking about waves, right? So when we talk about waves, there are many physical phenomena that takes place, and reflection, for example, we talked about refraction and what's the difference between reflection and refraction. Yes. Okay. So we'll start from there, right? So fiber optics communications is something that's very relevant today. You're using your, we're doing so much work on the internet, and we are actually studying online, we're teaching online. So this is very important and essential in the present scenario, and this has really revolutionized our lives. And so we have to also understand the physics of what's happening in this kind of communication. And these topics are very relevant to how this communication takes place, and why it is so efficient, and why it is so fast. So in order to understand this, we have to understand these phenomena that we are just talking about. So this is a diagram that explains the physics of what's happening. But before you understand this diagram, I think there's topics that we should clarify, and then we'll come to this. You can study this later on, right? So reflection of light, we talked about it last time. So this is a diagram that explains the reflection of light. So for example, a mirror is a typical example in which this line represents a mirror, and it's a mirror or a surface. It can be glass, it can be water. Light will come from one direction. We call this the incident wave. It's represented here by a wave. Sometimes it's represented as a line, which we call a ray. So that is just a geometrical representation. In reality, it is a wave, right? And then it strikes this surface on a certain point, and then it bounces back. And this phenomena is called reflection. Well, making the ray diagram makes it easier to understand the laws relating to reflection. For example, when we draw a line perpendicular to this surface, we call this line the normal. Normal means perpendicular.
And you see that the angle that the incident wave makes with the normal is called the incident angle, and the angle that the reflected wave makes with the normal is called the reflected angle. The symbols in this book, as you can see, are I and R, whereas in some books they use theta I, theta R. So anyway, whenever you use a symbol, it's always written what they're using that symbol for, right? So according to the rules of reflection, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Now, this is the second phenomena that's taking place, which is refraction. In refraction, the wave does not bounce back, rather it enters into the second medium. So for example, if we say that this medium was air, light was coming from air, and it enters into a second medium, which could be water or glass or anything, right? We have small lab experiments also where we do this. So you see that the difference in this case is this is the angle of incidence and this is the angle of refraction, not reflection. Again, this is the angle that this refracted wave makes with the normal. Also, you will notice that in the case of refraction, the angles are not equal, rather the angle changes. The angle changes means the path of the wave or light or whatever kind of wave it is or sound will change depending upon the density of the medium. Okay, so these are important terms and concepts relating to this. You have the explanation over here, so you can read this. So the rules, like I just told you, the rules of reflection are that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now there are some diagrams where this is explained and you can understand this just like I just explained, and this shows you how image is formed in the case of a mirror using the laws of reflection. We know that there are different kinds of mirrors. We have plane mirrors, we have convex mirrors, and there are different terms related to mirrors like the focus of the mirror. So these are represented in these diagrams and you can see them. And using these diagrams, of course, you can explain the concepts that we're talking about. Now we come to refraction. We've talked about refraction in the last class also. So refraction, again, I've highlighted some important points. The wave slows down. It means the speed of the wave changes, right? Its frequency remains constant, therefore its wavelength decreases. The wavelength also changes, but the frequency remains the same. So these are some important points you should understand. And if the wave approaches the surface at an angle, the direction of the wave changes. I just showed you with the help of the angles that the angles in the case of refraction are not equal. In the case of reflection, they're equal, but in the case of refraction, they're not equal. Okay. Now, this is another diagram that explains these concepts, and you can see this small formula. This will be useful for you when you're solving the problems. The lambda is equal to V over F. Lambda is the wavelength, V is the velocity, and F is the frequency. So if you have to calculate one of these, you can use this formula. Another important term in this reference is the refractive index of a material. The refractive index of a material is normally represented by N, and the formula, you can use this formula to find the refractive index of a material. This is the velocity in one medium and the velocity in the second medium. So in this case, if you're considering two mediums, one is vacuum and one is, let's say, glass or water or whatever, then you divide, the ratio is then known as the refractive index of that material. A vacuum normally is an idealization. Normally it's air, and air, the value for the speed of light in air is almost equal to the speed of light in vacuum. So you can use that. And here we have a table where we have some values, and when you're solving the problems, if you need any of these values, you can use them. Of course, you're not expected to memorize them, but the value for air is a standard, and mostly we remember this because it's very simple. It's 1. So this is a value that normally is a default value, and the rest of the values can be calculated using these values. Using again the simple formula of like this, for example. So we have talked about the fact that in the case of refraction, remember, don't confuse reflection and refraction. They're different. So in the case of refraction, the speed changes, the wavelength changes according to this formula, and the frequency remains the same. And then we have a law, which is a very important law, and this is known as the Snell's law. According to the Snell's law, this law can be useful in this case when we're dealing with the refraction. The angle of the sine of the angle of incidence divided by the sine
of the angle of refraction. In this case, R is not reflection, but refraction. So look at the diagram. And therefore, this is a ratio that is equivalent to the ratio of the refractive indices. But you should notice that this is N2 over N1, not N1 over N2. So it's inversely proportional. And then this is also proportional to the velocities. But now remember, this is V1 over V2 and not V2 over V1. So don't mix this. Try to understand this. Okay. In this case, refraction always takes place when a wave passes from one medium to another medium. So let us assume that the first medium is air and the second medium can be glass or water or something else. And this is the normal, the wave is coming here and the angle it's making with the normal here is I, and the refraction angle is R. So the first medium is called medium 1 and the second medium is called medium 2. So therefore, every parameter relating to the first medium is represented by 1. So N1 is the refractive index of the first medium, N2 is the refractive index of the second medium, V1 is the velocity in the first medium, V2 is the velocity in the second medium. So whenever you have such a problem, you draw such a diagram and you label it, and then so that you can use the formula correctly. Also, this Snell's law can be written in terms of the wavelength, and here you have the relationship with the wavelength in terms of the two medium that you're given or you're working with. So here you can also see that we talked about the fact that these are the rules. We just talked about these, and we also talked about the fact that the speed changes in this case. And you can see that when a wave, is going from a medium of lower density to a medium of higher density, it slows down. And also notice that the angle decreases. This means that the refracted ray is now towards the normal, is more towards the normal. It moves towards the normal. If the original path was followed, it would have continued like this, right? Similarly, the density of the medium is also relevant in this case. You can see that air has, for example, low density, and if it's glass or water, it will have higher density. So this also has a effect. Also, this corresponds to low and high refractive index. And so air has a low refractive index and this medium has a high refractive index. And similarly, if it goes from a medium of higher refractive index to a medium of lower refractive index, you see that the wave moves away from the normal. So this angle has now increased. R is now greater than I, because the original path would have been something like this if it had continued in the straight path, but that's not the case. So these are some very interesting rules. Now, these are some problems that you can practice based on the rules that we have just discussed. They are very simple problems, and the formulas and the concepts that we just discussed will help you solve these problems. Okay. Now, again, like we talked about lenses is again a very important application of these phenomena. And we know that we use lenses in everyday life. The glasses that we use, eyeglasses that we use, are also based on lenses. Many other applications you can see, even in your car, for example, you can use the mirrors and lenses and all that. So these are some important illustrations of these concepts. Again, you can see this is a phenomena in which this is the first medium is air, the second medium is water, and you can see how the waves are refracted, and the ball, for example, if it is here, it appears to be here. So there's a concept of real depth and apparent depth in the case of refraction. So this is a very understandable, for example, when you look at something in the water, right? So the atmosphere, we talked about this last time. The atmosphere again consists of many different layers, and we know that the refractive index also changes, and we know that the electromagnetic spectrum, which are waves, right, when they come, they also experience all these phenomena that we just talked about. So how light comes from the sun, for example, we last time also talked about the rainbow. Rainbow is also based on these concepts, right? And so another very important topic in this context is total internal reflection. Okay, now using Snell's law again, that we already just studied, according to the Snell's law, we studied sine I over sine R is equal to
n2 over n1. So if the second medium is air, the first medium is glass, then you can write it in terms of that. We know that the refractive index of air is 1, and therefore we can replace this with 1, and then we can calculate the second one. So our refractive index, we talked about simple reflection. Let me see the participants. Okay. I think I'll take the attendance now. Meanwhile, please look at this diagram and I'll come back to this, try to understand it. It's a very simple and interesting concept. And this is the concept that's actually applicable in optical fibers that we just started the class with. Okay, so try to understand this and then I am going to take your attendance. Let's see. Okay. So Ahmed Hassan, no. Fahad, no. Aisha, no. Musa, no. आज बहुत कम लोग आए हैं, खैरियत है? Mahanur? Yes, ma'am. Yeah, good. So taking a class is always useful, ठीक है? Whether it's online or offline. Nimra? Yes, ma'am. Good. Sayyid Izad Asad, no. Ahmed Farooq, no. Awais Khawer, no. Laiba is not here. Sahib ने शुरू में मेरा ख्याल है क्वेश्चन आंसर किया था. साहिब, where are you? साहिब लगता है लॉग इन करके गायब हो गया. Okay. Elia? Yes, ma'am. Good. Amna? No. Nashra? No. Aruba? No. Halima? Present, ma'am. Yes, Halima is there. Nawab is not here today, है ना? Present, ma'am. No, sorry. अच्छा, Nawab is there. Good. Okay. Sumavi? No. And Saul Rafaqat? No. So साहिब अभी तक नहीं बोला. इसका मतलब है साहिब जो है ना, he just logged in and he disappeared. इसका ये मतलब होता है ना. So साहिब okay, good. Right, now we come back again, since I have some announcements to make, so I'm going to share the board with you. Okay, so you know that we have Easter holidays, right? From Yes, ma'am. okay, so we have Easter holidays from the 1st of April to the 5th of April. So this is Thursday, Friday, and then Monday, right? So our next class will then be on, not on Tuesday. We don't have classes on Tuesday, on Wednesday, right? Okay. The second thing I would like to announce is that chapter 2 is almost complete now. So your homework is to study and prepare chapter 2. This is very important. Do this, okay? Because this chapter, the chapter number 1 was much easier. I know that, even and I know most of you did very well in the quiz and the assignment. I know it was too simple, but we started with the simple concept, and now you will need to properly prepare so that you can give a good midterm examination. This is important. A midterm examination is on, what's the date that I announced for the midterm examination? The midterm examination is on, Bolo? You don't remember? 14th of April. 14th of April, which is on Wednesday. And this will be during the class time. And please, it will be with a Zoom meeting. So you will join me in a Zoom meeting and you will do your exam with the camera on. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, गुड. इसकी अच्छी तैयारी करो. You have time, ठीक है?
तो चैप्टर 1 आपका प्रिपेयर्ड है, चैप्टर 2 को अब अच्छी तरह से तैयार करो एंड फिर इन दोनों चैप्टर से वी विल डू द मिड टर्म एग्जामिनेशन। बाकी सारा मटेरियल यू नो एवरीथिंग इज फाइन है ना, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद मूडल एंड विद योर, हाँ प्लीज इंटरनेट वगैरह का आप लोग प्रॉपरली पहले से इंतजाम किया करो, you cannot miss a exam or a quiz or any activity just because you did not make arrangements for internet or whatever। ये पहले से आपको इसीलिए शेड्यूल अनाउंस किया था कि आप पहले से अरेंजमेंट कर लो, ठीक है ना। और एक बैकअप भी रखा करो, यू नो कि अगर फॉर एग्जांपल वाईफाई थोड़ा वीक होता है तो आप डाटा ऑन कर सकते हो, या यू नो अपनी डिवाइस को भी चार्ज रखो साथ उसको। कोई एक घर में कनेक्शन ऐसा होता है कि जहां अगर लाइट चली भी जाए तो वहां आ रही होती है यूपीएस से या व्हाटएवर, सो प्लीज ट्राई टू मेक दीज अरेंजमेंट्स, ठीक है। जब आप मिड टर्म करोगे तो अपने पास आपने एक वो ब्लैंक पेजेस रखने हैं, अपना पेन रखना है, कैलकुलेटर रखना है, डोंट यूज एन ऑनलाइन कैलकुलेटर। मुझे पता है कि क्विज और असाइनमेंट में आप लोगों ने you know definitely you used means जिसकी वजह से you know you got but you cannot do that in the midterm now, ठीक है। ये आपने रखने एंड डू द वर्किंग ऑन दीज पेजेस, वर्किंग करके इसको स्कैन करें, आपको पता है कैम स्कैनर से या जैसे भी है बहुत अच्छे उसके वो लेके एंड अपलोड करें ऑन मूडल, इसको मैं देखूंगी, ठीक है। एंड देन बाकी आप मूडल पे ही उसके आंसर सेलेक्ट करेंगे जैसे हम ABCD सेलेक्ट करते हैं, बट आई आल्सो वांट टू सी द वर्किंग दैट यू डन फॉर दैट, सो इसकी प्रॉपर तैयारी करो। प्लस यू विल जॉइन मी ऑन अ जूम मीटिंग जिसमें कि यू विल स्विच ऑन द कैमरा, okay, so that I can see what you're working। और आप जब ये काम कर रहे होंगे तो you're not supposed to open any other tabs on your device, ठीक है। Moodle के टैब के अलावा कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स are not allowed, nothing else is allowed, ठीक है। So these are the instructions and the announcements। So this is the Easter break and this is the next class, ठीक है। Okay, now we go back to what we were studying। Okay, so I was talking about total internal reflection। Please try to understand the name total internal reflection। Okay, reflection, total internal, इसका मतलब क्या है कि the wave travels from a denser medium, high density medium to a low density medium, and क्या होता है कि जब हाई से लो की तरफ जाता है तो द वेव मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल आर बड़ा हो जाता है, राइट। As you go on increasing I, you will see that R will go on increasing. A stage comes when R becomes equal to 90 degrees. Okay, so the angle of incidence for which the angle of refraction becomes equal to 90 degrees is known as the critical angle। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी होता है जो हम लैब में करते हैं जिसमें हम आपको कहते हैं कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसमें आप क्रिटिकल एंगल भी ढूंढते हो। हम आपको एक ग्लास की स्लैब दे देते हैं और लाइट आप यूज करते हो ऑर्डिनरी सनलाइट कमरे में और पिन्स लगा के यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, राइट। अच्छा, अगर I को हम और ज्यादा बढ़ा दें, मोर देन द व्हेन I becomes greater than the critical angle, तो वो रे ऑफ लाइट अब 90 से आगे कहाँ जाएगी, 90 से आगे फिर वो अंदर आ जाएगी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अंदर वापस पहले मीडियम में आ गई है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना एंड इट हेल्प्स अस, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट, एंड इट हेल्प्स अस you know into optical fiber, this is the concept behind optical fibers and communication। so यहाँ पे ये प्रिज्म के साथ भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, यू कैन सी दैट। ऑप्टिकल फाइबर्स की हमने बात की थी, ऑप्टिकल फाइबर्स में अगेन जो लाइट सिग्नल होता है इट्स इसको ऐसे एंगल पे डाला जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो लाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और वो जाया नहीं होती, देयरफॉर इट्स वेरी एफिशिएंट। दूसरी बात ये
ये light की speed we know is the highest speed we can have in the world on earth, and therefore वो बहुत fast communication होती है. So the optical fiber is normally made from glass, ठीक है, or some reflective material, और ये एक layer होती है उसकी, और ये उसके ऊपर एक दूसरी layer होती है slightly different material की, जिसको हम cladding कहते हैं. इनका refractive index दोनों का different होता है. cladding का refractive index जो है N2 है, ये पहली वाली जो ये कैविटी है इसका N1 है, और ये लेट्स से एयर से अगर लाइट जा रही है तो ये N0 है. ठीक, सो यू कैन स्टडी दिस इन डिटेल. ठीक है, एंड इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ से इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूलाज को यूज करके यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. Now digital communication में again this plays a very important. Digital communication आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो we are familiar with this. We should also understand the physics. इसमें for example दो तरह के signals होते हैं. We have analog signals and we have digital signals. So analog means it's a continuously varying signal, जबकि digital means it has fixed values, a low value and a high value. So इसमें again this is the concept related to waves and CDs and DVDs, and इसमें we can also convert from analog to digital and vice versa. So this is an explanation of that. इसमें we also can talk about binary numbers for example. ठीक है, ये this is the technology that we are using when we are doing digital communication. एक और बहुत important concept जो आजकल आप लोग सब use कर रहे हैं, this is the global positioning system, which is the GPS system. The GPS system also is based on these principles. यहाँ पे we have signals from satellites जो हमें allow करती हैं to make calculations and determine your position and navigation and all that. ठीक है, and communication उन सब में ये use होता है. So these are some very important concepts. ठीक है, and they are very simple, very interesting. इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको बिल्कुल पता ना हो आप पहले से, right? You are familiar with all of these. लेकिन आप इसको properly पढ़ लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए for your examination. ठीक है, so let's we have completed this chapter. ठीक है, and ये नीचे we have some problems that you can look at, and let me see. Yeah, these are based on these formulas that we were studying, right? I'm looking for, okay, let's start with this one. Okay, chalo, let us start with this one. Okay, so we have a diagram, right? यहाँ पे the first question is what is the amplitude of the wave. अब आपने जिसने आंसर करना है अपना नाम बताना है और फिर आंसर करना है, if the answer is correct तो फिर I give you a point. चलो, let's start with this. What's the amplitude of this wave? मैम एलिया दिस साइड. जी एलिया. मैम इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा. 1 सेंटीमीटर. यूनिट भी बताना है. यस. ठीक है. यस मैम. Okay, so this is 1 centimeter and एलिया दूसरा बताओ वेवलेंथ कितनी है इसकी? मैम इसकी वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर. यूनिट बताया करो साथ. ठीक है. सॉरी यस मैम 2 सेंटीमीटर. ओके, तो टाइम पीरियड क्या है इसका? हमारे पास एम्पलीट्यूड है, हमारे पास लैम्डा है, सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है. ठीक है, तो हम उसकी पीरियड निकाल सकते हैं. यस मैम. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मुझे याद था, एक सेकेंड. हाँ, देख के बताओ. मैंने ये सॉल्व किए हुए थे मैम. हाँ, मिल नहीं रहा मैम. मिल गया मैम, मिल गया. मैम टाइम डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ साइकिल्स. मुझे लिखवाओ फॉर्मूला. टाइम डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ साइकिल्स. ये क्या हुआ? फिर क्या वैल्यू डालोगे इसमें? इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट?
मैम टाइम हमारे पास 8 से 8 है 8 और कहाँ से नंबर आया ऑफ है? सेकंड 8 कहाँ से आ रहा है? ये देखें मैम लास्ट में टोटल टाइम। ये तो डिस्टेंस है, ये टाइम तो नहीं है। अच्छा 1 सेकंड। इट्स ओके एलिया, कोई और बताना चाहता है तो कोई और भी बता सकता है, इट्स फाइन। नो नो 1 सेकंड मैम। मैम टाइम है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, लिखिए टाइम पीरियड है। वेरी गुड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड एलिया, अब तुमने सही बताया। तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे तो टाइम आ जाएगा। वेरी गुड, यू गेट योर यस पॉइंट। मैम। अब वेलोसिटी बता दो जल्दी से। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। नहीं, यहाँ पे बताओ वेव्स में क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का? वेव्स में हाँ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय पीरियड। फॉर्मूला बोलो। v इज इक्वल टू, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये है ना, ऐसे हो सकता है यार, दिस इज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय t। ठीक है, यस मैम तो आप यस ये मैम। यूज करके नहीं। वेरी गुड एलिया, यू गेट अ पॉइंट। अब एलिया अब सही आपकी तैयारी हो रही है ना? यू आर फेमिलियर विद यस मैम ये मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल करो। साथ साथ ही कर रहा रोजाना हूँ। आप 1 घंटा अगर अच्छी तरह से पढ़ लो ना तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी। लेकिन अगर आपने सोचा कि आखिरी रात बैठ के आपने पढ़ना है तो फिर यू विल कंफ्यूज एवरीथिंग। समझ आ गई? वो काफी यस मैम बर्डन हो जाता है फिर काफी। बर्डन हो जाता है प्लस कंफ्यूज हो जाता है, फिर आपको ये- खराब हो जाता है आपका एग्जाम। ठीक है, सो यस मैम। स्ट्रेटजी इज रोजाना 1 घंटा पढ़ लिया करो एंड यूल बी गुड। ठीक है, सो एलिया यस का मैम। नाम कहाँ है? लेट मी सी। यहाँ एलिया शफकत, राइट? सो यू गेट 1 पॉइंट, दैट्स यस वेरी गुड। ओके, अब हम कोई और प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। अच्छा ये क्या है? ये वाला देखते हैं अभी जिस टॉपिक पे हमने बात की है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कौन करवाएगा? यू विल गेट अ पॉइंट फॉर दिस। हाँ जी, who would like to try this? Come on, चलो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मूला। कौन सा यूज होगा? Who would like to point out the formula? Yes, मैम ये एलिया ही स्नेल्स लॉ बताएगा। का फॉर्मूला। कोई और नहीं ट्राई करना चाहता? मैं किसी और को भी पॉइंट दे दूं। हाँ, एलिया का पॉइंट तो हो गया हुआ है वैसे। बताओ, कोई और बताना चाहेगा? नो, चलो एलिया आप ही बताओ, फिर आपको मैं 2 पॉइंट्स दे दूंगी। ठीक है, चलो बताओ। नहीं मैम मैंने बस बताना था कि स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये sin i डिवाइडेड बाय sin r इज वेरी गुड। इक्वल्स टू इसको साइन n2 बोलते हैं हम, डिवाइडेड। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ये एक्चुअली इसके स्पेलिंग्स जो होते हैं ना, ये SINE होते हैं, लेकिन शॉर्ट जब लिखते हैं तो फिर हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल यस टू, मैम बोलो। इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1। N2 डिवाइडेड बाय N1। वेरी गुड। अब I क्या है और R क्या है? हाँ, और N2 क्या है और N1 क्या है? एक हमें अननोन होगा और बाकी चीजें नोन होंगी। ठीक है ना? यस मैम। तो ये क्या वैल्यू i है? है हमारे पास, आई हमारे पास इंसिडेंस रे है और r रिफ्लेक्टिव रेज ठीक है, और n N ग्लास n है हमारे पास मीडियन है, और ग्लास ओके। N1 और जो है ये N
एयर जो कि इक्वल टू एयर 1 होता है, ठीक है। ओके तो n यस ग्लास मैम इज इक्वल टू sin 30 ओवर sin 18। ये कैलकुलेट करके बताओ क्या निकलता है। आप सब लोग भी करो कैलकुलेट, सो दैट हम चेक भी साथ कर लें कि कोई गलती ना हो, ठीक है। सो कैलकुलेट द आंसर। हाँ जी, क्या आंसर निकल रहा है आपका? निकाला आपने? मैम मेरा 1.618 आ रहा है शायद। अच्छा चलो, आप सब लोग इसको चेक कर लो आंसर क्या है। हमने मेथड तो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे वी हैव अगेन टू मीडियम्स, वन इज एयर वन इज ग्लास। यहाँ पे एंगल हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, क्या ढूंढना है हमने? थीटा ढूंढना है। अब इसमें कौन हेल्प करेगा? हु विल हेल्प अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यस who would like to solve this? अभी काफी हमने इसके बारे में बात की है। यस कम ऑन। अच्छा, ये आप नोटिस करो, यहाँ पे यही फॉर्मूला है हमारे पास जो इधर यूज किया है, ठीक है। द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अब इसमें उन्होंने ग्लास की टाइप बता दी, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास। यू कैन गो टू द टेबल देयर अ फ्यू पेजेस बैक और वहां से इसकी वैल्यू ले लो, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू इस पे पुट कर दो एंड देन यू कैन फाइंड द एंगल। इज दैट क्लियर? यस मैम समझ आ रही है ना? टेबल में देखो क्राउन ग्लास की क्या वैल्यू है। We had a table a few pages back. मैम 1.52 देख लिया है सबने? चलो then I don't have to go and find it, ठीक है। तो आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। Yes, here. So you're going to say sin I क्या है? sin theta over sin 18 is equal to, क्या बताया आपने? n2 which is n glass which is equal to कितना था? क्राउन ग्लास 1.52 अब मुझे नहीं पता है, आपने खुद ही चेक किया, दोबारा चेक कर लेना। क्राउन ग्लास देखना है, ग्लास में भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, राइट? ओके, ये हो 1 गया। point yes नीचे 1 है तो वी डोंट नीड टू राइट 1। ओके, सो sin थीटा इज इक्वल टू 1.52 मल्टीप्लाई बाय sin 18। अब ये कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो ये कितना है, और फिर थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ द अबव वैल्यू। साइन इनवर्स देखो अपने कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे एंड यू विल गेट इट। इज दैट क्लियर? ठीक है, yes मैम so that's very good. Again we can look at another problem. This is now a problem जिसमें again we are talking about या हम water वाला कर लेते हैं अब। Let's look at water. So the path of ray of light passing from water, ये water है तो एक air है and this is given। हमें theta calculate करना है। Again this is very simple। अब कोई और try कर ले please। Elia gets 2 points. I would like to give some, आप लोग हैं या are you there or are you just logged in?
साहिब खान, are you there? No, साहिब खान ने आज उसने attendance भी नहीं अपनी mark करवाई. And what about any other person like Nawab? Nawab, do you want to do this? मैम ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के उसको Acha, I would like to make an announcement that the meeting is now going to end. ठीक है? I've made all the important announcements. So please prepare yourself accordingly for the